लाइव आ रही थी। Hey, hello.
Hello, a very warm evening to all of you. Good A evening, very ma'am. warm welcome to all of you. कैसे हैं सब लोग? I'm sure everybody is doing fine. Yes, ma'am. Very Great. fine. Very good, wonderful. Okay, जतिन सर आज गरिमा मैम के आईडी से ओके किस किसने कल करा? How many of us did that? क्या था कल का हमारा प्रैक्टिस? अदर पर्सन के लिए ब्लेसिंग्स करना, ग्रेटिट्यूड करना, मैजिक कैसे? मैजिक यस The मैजिक magic wand. The magic wand. वो जो छोटी सी एक जादू लोगों के पास जो लोग जादू करते हैं और उनके पास वो जो छोटी सी वो होती है सेम दैट इज कॉल्ड अ मैजिक वॉन्ड। आपने करा सुषमा जी कल? नो मैम, कल नहीं करा। कोई बात ऑनेस्टली नहीं, सेइंग नॉट। कोई बात नहीं है। सुविधा जी आपके क्या विचार कल की प्रैक्टिस पे? मैम एक्चुअली हाँ, वो तो मैं एक्चुअली कल लेक्चर के बाद भूल ही गई। लेकिन आज मैं जस्ट आई विजिटेड माय मॉम्स प्लेस एंड आई वाज बिजी माय ओन विथ माय ओन थिंग स्टफ पेशेंट ये सब। तो suddenly simply when I saw her just before lunch I was like why you are not having food, she was like थोड़ा low energy या ऐसे कुछ था। लेकिन वो बोल रहे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बट आई वॉज फीलिंग नॉट सो गुड बिकॉज ऑफ दैट, वो देख के नेगेटिव एनर्जी लग रही है। तो वो तो मान नहीं रहे, खाना भी नहीं खा रहे कुछ, शी इज नॉट एक्सेप्टिंग ओनली ना, फॉरगेट गिविंग हर मेडिसिन। तो मैंने ओके क्या किया, वो वही लेटी रही और मैंने बस बैठ के आई स्टार्टेड इमेजिनिंग दैट शी इज वेरी गुड नाउ एंड वो ये करेगी, लाइक ऑल दोस थिंग्स आई वांटेड हर, गेट अप, ग्रूमिंग करेगी या ऐसा कुछ अच्छे से। या और अभी या आएगी और खाना खाएगी वो सब। And not immediately, but after 1 hour or so, it happened. And after one वाओ hour, after couple of hours, she was a totally changed person. मतलब वो Happy जो Karwa negative, Chauth, everyone. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच गरिमा जी, सेम wish टू you यू। the same. या She was सो सुविधा totally different person. And उनकी जो negative energy थी वो पॉजिटिव में बदल गई। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इट वर्क। वाओ वेरी गुड वंडरफुल सो इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। Yes, ma'am. Great, Thank you. great Thank you sharing, my so much. dear. Wonderful. So, my dear friends, when we get the results, when we do, we realize that it works. When we do, we are the great fans, कि हाँ यार, ये तो एक बड़ी सिंपल और अच्छी चीज है जिसमें मुझे बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। चले, so coming back to गरिमा, happy करवा चौथ to you also, my dear. I'm sure आप सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, तैयार हुए हैं। वाओ वंडरफुल, वेरी गुड। ऑल्दो हम भी फास्टिंग, आई एम आल्सो फास्टिंग, माय हस्बैंड आल्सो, ही आल्सो डज द फास्टिंग बहुत सालों से। वाओ। Okay. आपका तो मैम डे होगा ना वहां पे। हाँ अभी सब धूप आ रही है सर। Okay. तो सब और किसने करा कल वाला प्रैक्टिस? बहुत सिंपल, बहुत अच्छा था। अच्छा तो बहुत था मैम, लेकिन मैं शायद भूल गई। कोई बात नहीं है, कोई नहीं बात तो नहीं है। डेली जो भी प्रैक्टिस होती है मैं जरूर करती हूँ। कल कैसे ओ, भूल गई मुझे ध्यान ही नहीं रहा। इसमें भी कुछ भलाई। यस मैम। और मनाली, you did it. Very good. Yes, ma'am. Wonderful, my dear Manali. Great. Even I did it yesterday. Because my daughter with whom I have come to visit my daughter, so I was thinking कि यार ये बहुत busy चल रही है, थोड़ा सा इसका मन थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। So yesterday also I did that magic wand practice on her. This morning also I did on her. And I felt that she's smiling more. She's better. Even I felt that. Wow. Although अपन सबको कोई जरूरत नहीं है, but then वाह। I just wanted to share कि यार मुझे भी लगा कि यार तो बहुत अच्छा हो गया उसके लिए भी।
क्योंकि कल करा ही था और मैंने एग्जैक्टली वही प्रोसेस उसके ऊपर किया, एंड इट वर्क्स, I did it. वंडरफुल वंडरफुल। आपने किस पे किया? मैम मैं यूजुअली ये वाली प्रैक्टिस करती ही रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली हाँ पेट्स के लिए। जो मेरे डॉग्स हाँ हैं, मैं डेली 60 हाँ डॉग्स को फीड करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस वो हेल्दी रहें। तो मैं हमेशा करती हूँ कि थैंक यू मैम यूनिवर्स जी फॉर जो भी मनाली मैंने उनके के नाम लिए रखे तो हैं। जैसे आज मैं लाली से मिली थी। शक्ल बूम बूम है वो। सही है, ग्रेट मनाली, इफ यू आर डूइंग दैट। वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इतने सारे डॉग्स को फीड करना। वैसे आपके पास वो लोग की बहुत ब्लेसिंग्स आ रही होगी, बट इट इज समथिंग वेरी नाइस, थैंक अपलॉड हिम, यू वेरी मैम। नाइस, वेरी नाइस। चलिए, कौन थैंक पढ़ना यू। चाहेगा आज मेरे साथ? आई कैन रीड, आई वुड लव टू रीड। ओके, ग्रेट। सो अभी हम शुरू करते हैं today's practice called Cue the Magic. अब देखिए साहब, our life is supposed to be very playful. Means what? Means life is something very simple, my dear ones. मैं अपन अपन बात करते हैं ना, we make it complicated. बहुत सिंपल है, सिंपल चीजों से खुशियां मिल जाती हैं हम लोगों को, but we wait for those great things to happen and then we'll be happy one day. अब देखिए, जहां तक हम पैसे के लिए सोचते कि यार वो पैसा कब आएगा, और अभी हम लोग खुद देख रहे होते हैं, वन ऑफ द प्रोसेसेस में हमने देख लिया कि इतनी सारी जिंदगी जो हम आज तक, हम जो लोग भी जितने भी इयर्स की हमारी लाइफ है, हमने नेचुरली खर्चे किए होंगे, बहुत सारे खर्चे हुए। तो आप सोचो कितना सारा पैसा हम यूज करते हुए आए हैं। सो दैट मच मनी केम टू अस, इजंट इट? Talking of the relationships, talking of all those things, now we have come to day 25. Cue the magic. To remind you of one thing which I keep telling every day. This book has 28 processes. 12 processes are just to work on what we have, in what we had in past and what we have now, to look at it, to notice that, to learn to notice that, and to be grateful for that, to offer our gratitude to that. उसके बाद वाली 10 practices, they are for our desires and dreams, उसको हम कैसे fulfill कर सकते हैं। अब जब हम इतना कुछ आने के बाद, जब अब हम यहां पहुंचते हैं, जो लास्ट की 6 है, those are for what? Those are higher level ones. Means what? They are for helping others. जैसे हमने कल करा magic wand, that is to help others. Whosoever, other means अपा आपके अलावा, तो other means आपकी इस body के अलावा कुछ और. So we can do that, or we can, we can also dissolve our own negative situations, dissolve problems, work on our negative situations. So इस तरह से ये divided है this book in 28 days. So today we are going to read Cue the Magic. Cue the Magic. अब आप देखिएगा मैं इस पिक्चर को कैसे देखती हूँ. I look at it, ये एक डायरेक्टर की सीट है, ये एक डायरेक्टर की सीट है जिसमें उसके पास वो जो चाहे वो फिल्म करवा सकता है. इन द सेम वे हम लोग भी डायरेक्टर्स हैं, इन द वे हम यूनिवर्स से जो चाहे वो करवा सकते हैं. Whatever we want from the universe, we can get it done. अब आप बोलोगे कि यूनिवर्स, जैसे आप सबको पता है यूनिवर्स के पास तो अथाह है, बहुत सारा है. अब यूनिवर्स यदि एक को देता, दूसरे को तीसरी चीज दे देता, तीसरे को अपने हिसाब से देता रहता, तो वो अगेन वी ह्यूमन बीइंग्स, बीइंग ह्यूमंस, एक कॉन्फ्लिक्ट आता कि उसको अच्छा दिया, मेरे को अच्छा नहीं दिया. तो यूनिवर्स ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, आप मांगो मैं देता हूं. तो आपने मांगा था, मैंने दिया है, तो इसमें कोई पार्शियलिटी की बात ही नहीं होगी कि उसको अच्छा था, उसको अच्छा नहीं है. उसके पास BMW है, मेरे पास नहीं है, उसके पास थार है, मेरे पास नहीं है, लफड़ा ही खत्म हो गया. तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनी हुई है. तो इसी तरीके से यूनिवर्स के पास तो अथाह है,
डायरेक्टर सीट उन्होंने हमें दी है। अब आप मांगो, आप क्या चाहते हो हम वैसा करें, है ना? बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था ये। चलिए साहब, यस बना ले। यस मैम। मैम अभी जब आपने बताया ना, आप समझा रहे थे, तब आपने बताया ना किसी के पास BMW किसी के पास थार है, तो आई जस्ट क्यूट द मैजिक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। I said Tar, keeping you in mind. थैंक यू। हाँ जी, Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Kolau, writer and therapist, born yes, 1954. यही अपन बात कर रहे थे ना कि लाइफ इज प्लेफुल, लाइफ इज सिंपल, इसमें बहुत सारी जॉय है, बहुत सारा पीस है। We need to play so that we can rediscover the magic all around us. There is lots and lots of magic around us. We need to find out, we need to get that, we need to play and to experience that magic which is always there. तो अभी आप यदि ऊपर पिक्चर देखेंगे तो ये वो वाला मैजिक है जो ऑल अराउंड है। आपको दिखेगा तो ये मैजिक है, नहीं दिखेगा तो ये बहुत सारा अंधेरा है, राइट? सो ये सारा मैजिक है हमारे पास, टू गेट इट। अब ये जो वर्ड है ना, क्यू द मैजिक, इसका मतलब ये है, क्यू द मैजिक जो टाइटल है बड़ा एप्ट है, बहुत अप्रोप्रिएट है, इन द सेंस, देखिए ये जो यूनिवर्स है ये हमको दिन भर में बहुत सारे क्लूज दे रहा है। अब उस क्लूज को लेके हम उस मैजिक को क्रिएट और रिक्रिएट करते रह सकते हैं। कैसे? अभी जैसे मैंने कहा कार, कार में मैंने कहा थार, थार इज काइंड ऑफ अ कार, ठीक है। अब इसमें मनाली ने कहा कि मैंने इसको क्लू ले लिया, थैंक यू, मेरे पास थार आ गई है। ऐसे ही लाइफ में अपन सबके पास दिन भर में बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती हैं, उसको उन सब का क्लू लेके, उन सबको एज अ क्लू लेके वी कैन बी इन ग्रैटिट्यूड, बी थैंकफुल एंड गेट दैट थिंग इन आवर लाइफ। मीन्स व्हाट? उसका हम एडवांस में थैंक यू कर। अंडरस्टैंड दिस? ओके, यस माय डियर। Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. यस, Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams, so it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you okay, hear, yeah, 1 second. You see, my yes, dear friends, as I told you, this universe is very friendly. आपको जो चाहिए वो मिलेगा। देन व्हाट इज द कंडीशन? उन्होंने दो चीजें बना के रखी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वन इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगेन, आप अब तो आप सबको भी याद है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट मीन पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका जो थॉट है वो वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए काम करेगा। दैट थॉट विल अट्रैक्ट मोर। ये मेरी बॉदरेशन कि व्हाट काइंड ऑफ थॉट इज आई एम पुटिंग इन द यूनिवर्स। सो नाउ वन कंडीशन इज दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अट्रैक्ट वही करोगे जो आप डालोगे। ये व्यवस्था बना रखी है यूनिवर्स ने, बिकॉज वो एक को देगा दूसरा उसको बोलेगा ना, जैसे मैंने अभी कहा। तो इन द सेम, इसलिए वो अपने लिए बहुत सिंपल सिस्टम बना दिया। जैसे मैं इसको एंटिसिपेट ऐसे करती हूँ, परसीव में इसको ऐसे करती हूँ। सो नाउ फर्स्ट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो दिन भर में हमको बहुत सारी साइंस, बहुत सारे क्लूज दे देता है। अब आप उन क्लूज को ले लो। अब ये क्यू द मैजिक प्रैक्टिस आपकी कौन सी नंबर की है? 25। यानी आप 24 प्रैक्टिसेस तक समझते हुए चले आ रहे हैं कि हमको नोटिस कैसे करना है,
हमको ऑब्जर्व कैसे करना है, isn't it? Now, when we look at it this way, the law of attraction, the thought which we have put in the universe, we would attract more. And then, when will we get it? Just by putting a thought? No. उसके साथ एक और चीज attached है. You have to be grateful for that. That means that gratitude has to be there. And then it would come to you. So this is how, simply to put it in a very simple way, it has put it in a simple laws. As simple as that. So how it is working? It's like this. Yes, my dear. Manali, I would like to read from here. It uses the people, circumstances. Yes, ma'am. Okay. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. Yes. This is how we have to find out. अब की बार जब भी एम्बुलेंस सुनेंगे, हम सायरन सुनेंगे, what will be the clue for us to remember that time, to be very grateful for our good health. उस एम्बुलेंस में कोई भी है, जो भी है, you can always bless the person कि उसको सही मेडिसिन मिल गई, उसको सही डॉक्टर मिल गया. यहाँ तो आप कर सकते हो, पर साथ में हम और क्या कर सकते हैं? हम साथ में ये कर सकते हैं कि we are so very grateful for our own good perfect health. Same the police car, same when you see a newspaper. ऐसे ही इन्होंने example दिया है. Otherwise, when you will look at your life, there would be 101 things. आप जिसमें से उसका clue निकाल लेंगे. Oh, I am so grateful for this. This is today's practice. Yes, my dear. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. Wonderful. कितने प्यारे एग्जाम्पल्स हैं. आप देखिए ना, अभी इसमें अगेन अपन सबके पास हर वक्त, हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टेंस, हर कंडीशन में दो चॉइसेस होती है, राइट? ये तो हम सबको पता है. नाउ इफ व्हेन आई लुक एट समबडी who has that perfect weight which I want for my body, now if I can be two things. One, I can be very grateful for that perfect that my body also has, or one can crib. हुआ तो है नहीं, कहां से मैं grateful हो जाऊं? रोमांटिक पार्टनर, मेरा पार्टनर रोमांटिक हो तो मैं करूं ना. अरे भाई, आप करोगे तो वो भी होगा ना. हमारी ग्रेटिट्यूड ही तो नहीं है, वहां पर कंप्लेन ही तो है, तभी तो वो चीज नहीं हो रही है ना हमें. ठीक है, ऐसा बहुत बार होगा कि आप कंप्लेन और ग्रेटिट्यूड में झूलते रहेंगे. इट्स ओके, आई सी इट टू बी ओके एटलीस्ट. वरना तो एक ही सिचुएशन हो सकती थी ना, कंप्लेन कंप्लेन एंड कंप्लेन. बट यदि मैं कंप्लेन में जाके फिर ग्रेटिट्यूड में जा रही हूँ, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग एंड आई एम लर्निंग. यही तो करना है, isn't it? So, or it can be for money, it can be for house. तो अब जब भी हम घर जाएंगे, हम सब लोग काम के बाद जब घर आएंगे, when you enter the house, when you enter your home, sweet home, we can always be very grateful for this beautiful house, right? So this is how, these are certain examples we can talk about. Yes, my dear. If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer,
Of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. Wonderful. अब आपके पास डिजायर है, then only you can be grateful for that. अभी मेरी डिजायर ही नहीं है, मैंने लिखी ही नहीं है, आज तक नहीं लिखी है मैंने, बुक खत्म होने को आ गई है, लिखी है तो मेरी डिजायर्स खट 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 बोल सोच सोच के ग्रेटफुल हो के मैं एक के बाद मेरी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर लूंगी. नहीं लिखी है तो लिख लूंगी, लिख के अब मुझे पता चल गई है सारी प्रैक्टिसेस तो मैं कर लूंगी. But have to do that. So if when you happen to see any of the material things and we want that, we also want that. What we can do, उसी वक्त be in gratitude. So simple, my dear. So simple it is. But याद क्या होता है, हमें याद ही तो नहीं होता है. मतलब हम अपनी लाइफ में इस चीज की ही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं. हम पिछले 28 दिन से क्या कर रहे हैं, ये ही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, वरना तो भूल जाते हैं. We have got so many things, we forget. So by doing this, we are learning, we are practicing to see, observe, notice. Okay, dear. मैम, हाँ. टॉकिंग अबाउट डिजायर्स, जो आपने कहा था ना कि लिख लेना सारी, तो मैंने ना हाँ. एक अलग से नोटबुक बना ली थी. वो नोटबुक पूरी डिजायर्स से भर चुकी है. रोज कुछ ना कुछ नई डिजायर मिलती है और पूरी होती जाती है, तो मैं उनको टिक करती जाती हूँ. बहुत Very सारी good. पूरी हो गई हैं और वो पूरी तो नोटबुक भर गई है. वो A4 साइज की जो अपनी नॉर्मल 100 Normal पेजेस से. वाली नोटबुक है, वो है. अब आप देखना कि अब आप नंबर डालते हो क्या कि डिजायर में नंबर कौन सा है ये. यस मैम, यस मैम. वेरी गुड. अब आप किसी दिन, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 15 दिन हो गए हो, एक महीना होने को आ गया है, अब आप एक महीने डेट डालते हो. यस मैम. वेरी गुड. अब फॉर 30 एग्जाम्पल, डिजायर्स पूरी हो गई हैं अभी तक इस साल की. wow, very good, wonderful. So my dear friends, all of you, we all can do this way. It's a beautiful way to do it. Very good. थैंक यू. Thank you for doing it. Thank you so much. थैंक Great. यू. चले आगे बढ़ते हैं. Yes, ma'am. When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. I have to say one thing, my dear. I have been working in a school for so long. I have worked in a school for such a long time. So we come across many people. See, my purpose here is not to pass a judgment. No, not at all. What I'm trying to say is we really have to look at ourselves when somebody says good morning or when we say good morning. What kind of energy is that? क्या मेरी गुड मॉर्निंग में हैप्पीनेस है कि कोरे वर्ड्स हैं? क्यों? क्योंकि जैसी मेरी फीलिंग्स होंगी वो जा रही है यूनिवर्स में. मुझे उस गुड मॉर्निंग का जवाब मिल रहा है कि नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ गुड मॉर्निंग. और फॉर दैट मैटर गुड मॉर्निंग की जगह हम कोई, जैसे कुछ लोग कुछ भगवान का नाम लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, बट उस भगवान का नाम हम एक दूसरे को लेके किस टोन में जवाब दे रहे. What we give to the world would come back to you. So in the same way, whatever is our tone, same vibrations would come back to us. इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास जो दिन भर में जो हमारे पास जो अंदर होता है वो ही बाहर निकलता है. हमारे पास सिचुएशंस, वही बाहर भी वही सिचुएशंस आती है. Right? So next time when we say good morning to somebody, we will really ensure that we say good morning with a lot of love and happiness. Because when you give out happiness, happiness would look for you. वो ढूंढ के आएगी आपके पास, कहाँ है? In the same way, when we say thank you है कि भाटा है, thank you है कि पत्थर है, मैम good morning है कि पत्थर है. That is what I would say. So let us do this way. Right, my dear ones? आगे बढ़ते हैं. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you
to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong because whatever you think a cue is for you, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. Now, आप देखिए कितनी बड़ी साइंस है. लॉ को देखिए आप. आपके यहाँ से थॉट गया, आपके यहाँ से थॉट गया, जो वो अट्रैक्ट करेगा. अब जब वो अट्रैक्ट करेगा, वो अब जब मैं ग्रेटिट्यूड में आके क्यूज को देख के थैंक यू बोल रही हूँ, ग्रेटफुल हूँ, तो द यूनिवर्स इज डूइंग व्हाट? नाउ द यूनिवर्स इज गिविंग मी ऑल दोज क्यूज ओनली which will help me to take a clue and be more grateful. अब आप मुझे बताइए कितनी ब्यूटीफुल व्यवस्था है. कुछ नहीं करना है, बट जो करना है उसको सिंसियरिटी के साथ करना है, पूरे दिल के साथ करना है. And that simple method is what it is talking about. Yes, my dear. Cue the Magic has become a daily game I play. And with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me. And I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. Yes. So now since the universe is using the law of attraction हमारा, जो हम thought दे रहे, right? Now, उसके बाद I'm getting, now just see, it has become a beautiful game. आप दीजिए, वो दे रहा है, आप दीजिए, वो दे रहा है. अब आपने एक सही दिया, उसने 4 दिए, आपने 4 दिए, उन्होंने 8 दिए. अब आपके ऊपर है, हमारी ताकत के ऊपर है, हम क्या दे रहे हैं. So this automation is there. कुछ सोचना नहीं है इसमें. I give thanks for one thing, I get for 4. So when I give for 4, I get 8. So it all depends on my level of gratitude. And this is how the motion of gratitude is into motion. The magic of gratitude is in motion. Beautiful. I just love it. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM or I see people in line at an ATM, it's cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. How beautifully written. When I receive a phone call, my dear friends, see, when we receive calls, if we are busy, now again, 2 choices. We have to learn to be in gratitude. At least somebody called. See, it is, if people are not calling, it is not in your hand, that you cannot force others to call you. But when they are calling you, it is in our hand to be grateful about it, that they are calling you. So, अभी हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, इसको कुछ काम पड़ा होगा, इसने इसलिए कॉल किया है, राइट? या अपन को लगता है कि ये तो बहुत फ्री है, I am such a busy person, I don't have time. But dear friends, we need people in our life. We are humans, we are not machines. We just cannot be working. We need everything in our life. So when somebody is calling us, it's a cue to be grateful that we have people in our life. If you get something, it's cue to be grateful that you are getting something.
So same way for appliances. एक खराब हो जाता है तो हम उस चीज के लिए, आज मेरी वॉशिंग मशीन सपोज नहीं चल रही है, ठीक है, मैंने एक बार बोल दिया कि मेरी वॉशिंग मशीन नहीं चल रही, प्रॉब्लम हो गई थी, बट नाउ अगेन इट्स माय चॉइस इफ आई टॉक अबाउट दैट वॉशिंग मशीन with 10 more people, because it's not only that washing machine is not working, there are different 10 more things which are working in the same way. ऐसे ही हम अपने relationships के साथ बात करते हैं, मेरे बाकी सब लोग बहुत सही है, मेरा एक चीज किसी के साथ कुछ किसी ने कहा तो we would keep talking about it. I got 10 beautiful compliments, वो तो एक दरकिनार हो जाता है. I will talk about that one thing which I may feel कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था. But then still you have somebody, I feel here कि यदि I very strongly believe एक चीज को कि हम सबकी लाइफ में अब ऐसे बहुत कम लोग हैं क्योंकि जो अपन को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो अपने लिए कुछ अच्छा बताने के लिए कुछ गलत होता है तो उसका भी जिक्र करते हैं, वरना ज्यादातर लोगों को लगता है यार अपन क्या कर सकते हैं, जाने दो. सो इफ somebody is coming, see, अपन को पता है कि ये शिकायत है कि ये उसकी इल फीलिंग से अपन को पता है कहाँ से आ रहा है, बट are we ready, are we grateful that the other person is saying something to help me, right? So these are all the clues, dear ones, to be grateful. किसी को हॉस्पिटल में पूछने गए हैं तो वो जिंदा है, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन कि उसको सही टाइम पे सही इलाज मिल गया है, दवा मिल गई है, एंड एट द सेम टाइम वी आर ग्रेटफुल फॉर आवर गुड हेल्थ. और जब सुबह सुबह हम कर्टन्स खोलते हैं, कल से जब आप सुबह सुबह उठेंगे, आंख खोलेंगे अपनी, तो you will look at the bright beautiful morning. We are, as it is, we all do this practice, but then we will, first thing, we would be very grateful for the great day ahead. And tonight when you will go to your bed, you will close your curtains. Beautiful day. I'm very grateful for the beautiful nice day, right? Yes. Yes, Manali. To play Cue the Magic today, all you have to do is to be alert enough. So, yeah. To play Cue the Magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become. And the more easy one you... second, my dear, 1 second. Yes, रेणुका ma'am. जी, आप म्यूट पे चले जाइए. रेणुका जी, प्लीज, थैंक यू. sorry. That's okay. हाँ जी. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become. And the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. Isn't it a beautiful practice? Yes, So ma'am. what is the practice we have to do? We have to see, now it's almost going to be 9:30, 9:15 at your place. Tomorrow we will look for at least 7 magical cues which the universe is giving us. And then we will, each of the clues, by taking each one of the clues, we would be thankful and be in gratitude. Why? Law of attraction. And then, as we were talking, by now, today is day 25, by now, we all have learned how to be alert, how to be aware, how to notice, how to observe the clues the universe would be giving to us.
And then what is the benefit? Important benefit. I would love to read this line again. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. Matlab, you will be grateful, more grateful for many things, many more things now, which in many, I mean, if you talk about past, we might have not be able to notice, but now we would be in a position to notice them, to observe them. So we have become far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become. क्योंकि जितनी बार आपको क्लू मिलेगा, उतनी बार आप ग्रेटफुल होंगे, तो उतनी बार ग्रेटफुल होंगे यानी आप मोर एंड मोर होते जाएंगे. So when we are becoming more, easily we will attract our dreams. So last, not the least, universe, cue the magic. Universe, give us the clues to attract that magic in our life. Beautiful. Yes, dear. Magic practice number 25. Cue the magic. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, today, Yes. be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say, thank you for my perfect weight. Third, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that's happened during the day. Beautiful. So now, my dear friends, when we have learned how to cue the magic, when we have seen how to get the clues, our number of blessings would not be limited to 10. Of course, by now, day 25, we have learned more, but it would be far better than what we have started with. And what is the practice? We have to write at least 7. It can be any number, but we have to write at least 7 gratitude cues. And then what would be my sentence? It's written very easily there. And just before we go to sleep tonight, magic rock, naturally, when we learn to see so many clues, we learn to be more grateful. So when we are more in gratitude, we have more things to be happy about. So naturally, we would be talking more to our magic rock also ki kya kya acha acha hua tha, I think for me. Isn't it, my dear friends? Beautiful practice. Please do it. Ma'am, I want to ask something. अभी एक सेंटेंस है ना कि ask about a perfect weight के बारे में. Just so if you मतलब आपका अगर डिजायर है वो वेट अचीव करने का और अगर वो सामने आया तो ही बोलना चाहिए थैंक यू हाँ हाँ ग्रेटिट्यूड. कि जो सपोज आप आई एम लाइक आई एम परफेक्ट वेट, तो बस अगर तो फिर आपकी सामने वाला डिजायर ही भी नहीं वही होगी. वेट का है. नहीं, आपकी क्या होता है ना माय डियर, वो डिजायर. अभी एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात है. अभी जैसे मनाली थार की बात करी थी. अब यदि मनाली के पास थार है तो मनाली की डिजायर दूसरी थार नहीं होगी, फिर कुछ और होगी. इजंट इट? अब ऐसी सुविधा जी, आपका ऑलरेडी परफेक्ट है तो व्हाई वुड यू गो फॉर अ परफेक्ट वेट? ये तो वो करेगा जिसका इम्परफेक्ट वेट है. आपके पास कुछ और डिजायर होगी. ओके तो वो डिपेंड. क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी आई हाँ, कैन बी ग्रेटफुल ना. या ओह यस, आई ओह कैन एक्सप्रेस माय यस, ग्रेटिट्यूड, बट जो आप आराम 7 से. चीजें बोल रहे हैं वो अलग है. हाँ, ओके आराम से, आराम से. ये तो एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, बट इसके लिए तो हमारे सबके पास, यदि अपन कल मिलके यदि अपन देखेंगे ना, तो सब कुछ अपन साथ की बात भी करेंगे ना सविता जी, तो हम सबके पास सातों अलग होंगे, है ना? हम सबकी सातों अलग होंगी कि होंगी? बिल्कुल होंगी. यस मैम. या, नो, दैट इज वंडरफुल. यस माय डियर. ओके थैंक यू मैम. Ma'am, I have a doubt. So हाँ जी we are जी. talking about the perfect. Zinat, Yeah, so we were talking about the perfect weight. one second. But like Is the question I would related like to perfect weight? no, it's not हाँ, related to perfect weight. I am talking हाँ. here about a like I just want to understand like it's just a metaphor, you can think so. Like I am Yeah, comparing yeah. with the weight.
Okay. 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 So having a perfect weight, or suppose if someone is a world number one, okay, so he want to retain that position because being in that position is not an easy. So does this come Okay. into that? Like I want to be there for almost 10 years or 15 years. Like I want to be like I'll just read you one thing. Just now I have put in my status. Beautiful. One second. Give me a moment, my dear. कहाँ गया? I see. You can create anything you want, but to do that, you must follow the principles of the law, eliminate all doubt, and replace it with full expectation that you will receive what you are asking for. If you are not receiving what you are asking for, it's not the law that has failed. It means that your doubt is greater than your faith. My answer to your question is, my dear, if your faith is there, you will not have doubt, so you will retain it. My purpose of reading is like मेरी इसमें एक selfish motive था. I really wanted this message to bring to you. तो अब आपके क्वेश्चन ने मेरे दोनों पर्पस को सॉल्व कर दिया. आपको आंसर भी दिया और आपका पर्पस भी. Do you agree or understand it, my dear Zinat? please ma'am, can you read it one more time because it's like a Yeah. very depth one, so it takes some Yes. time to. You can create anything you want. You can create anything you want. But to do that, you must follow the principles of the law. You all know that we are all governed by the laws. Now, eliminate all doubt and replace it with full expectation that you will receive what you are asking for. यहाँ पर expectation is your visualization. Right? Now, if you are not receiving what you are asking for, it is not the law that has failed. It means that your doubt is greater than your faith. I'll put it in the group also. So the answer to your question is, if I have doubt that I am number one, but अब तो मैं कभी भी चली जाऊंगी, कभी भी खत्म हो जाएगा, वो कल भी हो जाएगा. Because I already have a doubt. Isn't it? और अभी इस प्रैक्टिस से रिलेटेड जो आज का प्रोसेस है, my suggestion would be, dear friends, look at the clues from the universe and learn. We all will try to learn to see those clues and be grateful about that particular thing in my life. Getting my point, dear ones? Yes. Yeah. Okay. Any more question? Any doubt? Any sharing? किसी को कुछ और कहना है? यानी हम दिल से चाहेंगे तो वो मिलेगा ही मिलेगा. हाँ साहब, बिल्कुल है. बात तो वही, दिल से चाह के आपने उसको, आपको फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप शायद लेट ज्वाइन किए होंगे विशाल सर. अभी मेरी एक बात हो रही थी कि थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी कि यदि किसी को कार चाहिए, किसी को थार चाहिए, तो मनाली कह रही थी मुझे थार चाहिए. तो अब वही वाली किसी की कार देख के आपने ग्रेटफुल, आपके पास अभी थार नहीं आई है, बट यू आर ग्रेटफुल दैट आई हैव अ थार. तो आपने किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड किया है? जो चीज आप चाहते हैं और वो आपके पास आ जाए, बट आपने ग्रैटिट्यूड उसका एडवांस में कर लिया. तो ये क्लू हमको मिला है यूनिवर्स से. तो दिस इज द प्रैक्टिस, माय डियर फ्रेंड्स. हम सब ऑब्जर्व करेंगे और कल हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि tomorrow I'll meet you and I'll ask you how many of you were able to. It is not necessary, dear friends, कि मेरे को 7 clues मिले, मुझे 2 भी मिले हैं ना. At least I am learning. I'm able to notice. ऐसे ही तो सीखेंगे ना. How else? But कोशिश तो करेंगे ना. And then this is how we will learn it. So tomorrow before I start my next process tomorrow, I will ask you how many clues did we all get. Please be ready. कोई एग्जाम नहीं है, नहीं आया तो भी कोई बुरी बात नहीं. There is nothing right, there's nothing wrong.
आ गया तो भी बहुत अच्छा है, नहीं आया है, हाँ 100% आपने कोशिश करी, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज मैम इम्पोर्टेंट। हाँ जी जो सुनीता जी। मेरे पास नहीं है वो होगा क्यों अभी? दैट ओनली आई विल आस्क फॉर ना। नॉट फील नेसेसरी। ग्रेटफुल। अभी देखिए जैसे अभी आपकी हेल्थ है, ठीक है, अभी आप फॉर एग्जाम्पल अपन की हेल्थ बहुत अच्छी है, ठीक है, अभी अपने को सायरन सुनाई दिया एम्बुलेंस का, तो मेरे पास हेल्थ बहुत अच्छी है, तो मैंने उसके लिए कर दिया, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द गुड हेल्थ। इन द सेम वे जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आपने किसी की कार देखी, कार का हॉर्न देखा, ब्यूटीफुल कार देखी, और आपने ग्रेटिट्यूड किया कि ये वाली मेरी भी ये बहुत खूबसूरत सी कार है। अब आपके पास कार नहीं है, तो मेरे कहने का मतलब है आप दोनों चीजों के लिए क्लूज कर रहे हैं, जो है उसके लिए भी, जो नहीं है उसके लिए भी। तो अपनी कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं इसी चीज के लिए कर सकती हूँ। ओके हाँ जी माय डियर, ओके मैम, थैंक यू मैम। you're welcome. Any sharing, my dear ones? Any question, any sharing? चले फिर मिलते हैं हम कल 8:30 बजे नई प्रोसेस के साथ, डे 26 के साथ। Okay, dear ones, thank you Manali for reading, my dear. Thank Thank you, you ma'am. so Thank much, all of you. you, for Thank joining you, and ma'am. being there. Thank you. Thank you, Thank thank you you. so much.